My screen. Today we'll study about the Big Bang Theory, how the evolution of universe happened, how universe came to its present state. This is more of a topic of quantum physics and astrophysics, but me, despite being an environmentalist, I'm trying my best to explain this topic in as simple a way as I can, because this topic is mentioned in the syllabus of UGC NET, and that's why we need to really cover this topic. Let me share my screen. Okay, I'll have to open my Google account. So what is the Big Bang Theory? Big Bang Theory क्या है? ये एक थ्योरी या प्रोपोजिशन है जो बताता है कि यूनिवर्स या हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म और बहुत ही घना, बहुत ही डेंस फुल स्टॉप की तरह था, जो एक सुपर चार्ज ब्लैक होल की तरह था। वहां से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता था। और 13.77 बिलियन ईयर्स पहले एक धमाका हुआ, और जिससे सारा मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस बना, हमारा आज का ब्रह्मांड बना। So the Big Bang Theory states that the universe began as a super hot and infinitely dense point, very dense point, resembling a supercharged black hole. About 13.77 billion years ago, it exploded to create all time, matter, energy, and space. The explosion of the super hot dense point, which created all time, matter, energy, and space, is called the Big Bang. वो धमाका हुआ जिसकी वजह से समय, मैटर, एनर्जी सब कुछ बना, उसको हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स था, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी, उसके दो मुख्य स्टेजेस थे। पहला था रेडिएशन एरा, दूसरा था मैटर एरा। तो रेडिएशन एरा में जो डोमिनेंट फैक्टर था वो रेडिएशन था, और जो मैटर एरा में डोमिनेंट फैक्टर था वो मैटर था। तो रेडिएशन का मतलब हम यहाँ सिर्फ विजिबल लाइट से न समझें। रेडिएशन में विजिबल लाइट भी होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट भी होता है, माइक्रोवेव रेडिएशन भी होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन भी होता है। रेडिएशन मतलब किसी भी तरह का की ऊर्जा, वो था पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में मैटर आया, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, गैलेक्सी, स्टार्स, ये सब, प्लैनेट्स, मून्स, ये सब फॉर्म हुए, तो वो मैटर एरा था। So there were two main stages in the evolution of the universe. The first one was radiation era. This era was marked by the dominance of radiation, and it had about 7 or 8 smaller epochs. So by radiation, we don't mean just visible light. Radiation could be visible light, ultraviolet light, microwaves, infrared radiation. There could be all kinds of radiation, all kinds of energy. So this era, the first era in the evolution of universe, was marked by the dominance of radiation or energy. Second era was the matter era, and this era was dominated by matter and eventually created today's universe and our own solar system. So the radiation era had smaller stages, which are called epochs, epochs are a small moment in time where something significant happens, some significant change happens, and it gives way to another change. That's an epoch. So a small moment in time where a significant change happens is an epoch. So the first epoch in the radiation era was Planck epoch. Then was a grand unification epoch. Then was the inflationary epoch. Then was electroweak epoch, Quark epoch, hadron epoch, Lepton epoch, and nuclear epoch, which is also called the photon epoch. Here, I just want to discuss a few things. So inflationary epoch is sometimes mentioned by some astrophysicists. Some don't describe it as a separate epoch, but describe it as a part of the electroweak epoch, because different physicists
have minor variation in their philosophy about the Big Bang. So you can read the Big Bang theory from multiple sources, and they have multiple deviation in the energy in the literature that they offer. So अलग-अलग किताबों में बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी थोड़ा बहुत अलग-अलग विचार मिलते हैं. तो सारे किताबों में बिग बैंग थ्योरी को एक सा नहीं बताया गया है. तो कुछ किताबों में इन्फ्लेशनरी एपक और इलेक्ट्रोवीक एपक को अलग-अलग बताया गया है. कुछ किताबों में इलेक्ट्रोवीक एपक में ही इन्फ्लेशनरी स्टेज को डिस्कस कर दिया गया और इन्फ्लेशनरी एपक को अलग से नहीं बताया गया. तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट और क्वांटम फिजिसिस्ट की जो राय है वो थोड़ी बहुत वैरी करती है, पर मोटा मोटी बिग बैंग थ्योरी में जो फिनोमिनन हुए थे वो मैं आपको आज बताऊंगी. उसी तरह से मैटर एरा में भी एटॉमिक एपक, गैलेक्टिक एपक और स्टेलर एपक है. पर कुछ साइंटिस्ट एटॉमिक और एपक और गैलेक्टिक एपक को डार्क एज ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं, और स्टेलर एपक तो व्हेन द स्टार्स वर शाइनिंग, जब तारे चमक रहे थे तो ऑफ कोर्स देयर वाज लाइट इन द यूनिवर्स. So again, for matter era, some physicists describe atomic epoch and galactic epoch together as the dark age of the universe, and later when stars started shining, it was the light age of the universe. So there are certain variations in how Big Bang theory is explained by different physicists. We don't need to be nervous about it, because overall it's the same Big Bang theory, and the phenomenon happening in the universe were the same. Just the stages are differently viewed by different astrophysicists. But in totality, what happened in the Big Bang, I'll explain it to you. So far, we have learned that there was a Big Bang, there was the first era, which was the radiation era, marked by the dominance of radiation or energy. Second was the matter era, which was marked by the dominance of matter. So let's move forward. ये एक इमेज है, बहुत इंटरेस्टिंग सी इमेज है. इसमें क्या होता है, ये किसी कलाकार ने बनाई है कि यूनिवर्स ये एक फुल स्टॉप की तरह था, वहां से शुरू होते हुए आज हम यहाँ पर हैं. ये कैसे हुआ? तो ये इन्फ्लेशन हुआ, यूनिवर्स फुल स्टॉप की तरह था, फिर धमाका हुआ और ये इस तरह से यूनिवर्स फैला, जो है बहुत कम समय में बहुत बड़ा स्पेस उसने अक्वायर किया, क्योंकि धमाका हुआ और एकदम से वो सुपर डेंस पॉइंट जो है वो फूलने लगा, फूल गया गुब्बारे की तरह. तो वो बिल्कुल देखिए यहाँ से बिल्कुल ऐसे इतने कम समय में इसने बिल्कुल इतना रूप ले लिया. उसके बाद एक टाइम आया जब सारे जो क्वांटम पार्टिकल्स थे वो एक सूप की तरह थे, और ये था आफ्टरग्लो लाइट पैटर्न, which was 375,000 years after the Big Bang. तो 3,75,000 साल बिग बैंग के बीत जाने के बाद ये एक आफ्टरग्लो लाइट पैटर्न था यूनिवर्स में. ये क्या था? ट्रांजिशन फ्रॉम प्लाज्मा टू न्यूट्रल स्टेट कॉल्ड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड. तो यहाँ पे अब माइक्रोवेव रेडिएशन यहाँ पे है, ये रेडिएशन एरा ही है, डोमिनेंस ऑफ रेडिएशन है, यहाँ पे माइक्रोवेव रेडिएशन है, और यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स का अपना अलग अलग टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं. तो ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है ये और कुछ नहीं है, ये माइनर टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं रेडिएशन की, और ये यूनिवर्स अभी इस तरह का है. उसके बाद डार्क एज है, ये एटॉमिक एज और गैलेक्टिक एज है. अभी तक तारे नहीं बने हैं लेकिन मैटर शुरू हो गया है. उसके बाद 400 मिलियन ईयर्स साल बीत जाने के बाद, बिग बैंग के 400 मिलियन ईयर्स के बाद पहला तारा चमका, और उसके बाद फिर बहुत सारे तारे चमके, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, और फाइनली यूनिवर्स जो है वो यहाँ तक, ये टाइम में ट्रेवल करते करते यूनिवर्स फाइनली यहाँ तक है. हमें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला? तो एक प्रोब है जो नासा ने भेजा था, जिसका नाम है विल्किंसन माइक्रोवेव एनास्ट्रोफी प्रोब, WMAP. ओरिजिनली इसको माइक्रोवेव एनास्ट्रोफी प्रोब कहते थे, और ये नासा का स्पेसक्राफ्ट था जो 2001 से 2010 तक स्पेस में था, और उसने सिर्फ स्पेस की रेडिएशन को स्टडी किया. कौन कौन सी रेडिएशन उस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंची और वो कितने दूर से पहुंची, कितने टाइम से पहुंची, ये उसने स्टडी किया. और उससे पता लगा कि यूनिवर्स में ये एक आफ्टरग्लो लाइट पैटर्न भी था, क्योंकि यहाँ से भी कुछ रेडिएशन उसने उस इंस्ट्रूमेंट तक पहुंची, उतने सालों बाद की रेडिएशन उस इंस्ट्रूमेंट तक पहुंची, तारों की अलग अलग गैलेक्सीज की रेडिएशन उस इंस्ट्रूमेंट तक पहुंची. तो एक उस इंस्ट्रूमेंट ने हमें एक जानकारी दी, जिसकी बेसिस पे किसी कलाकार ने फिर ये एक यूनिवर्स का पैटर्न ड्रॉ किया है. एक छोटी सी बात कि यूनिवर्स में जो डिस्टेंस का मेजरमेंट है वो क्या है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम उस डिस्टेंस को किलोमीटर्स में या मीटर्स में या माइल्स में हम उस डिस्टेंस को मेजर कर ही नहीं सकते.
तो यूनिवर्स में जो डिस्टेंस का यूनिट है वो है लाइट ईयर्स. लाइट ईयर इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. प्रकाश वर्ष. तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं. तो ये जो डिस्टेंस मेजर करता है प्रोब, कोई भी यूनिवर्स का जो डिस्टेंस मेजर होता है वो लाइट ईयर में होता है कि कितने प्रकाश वर्ष दूर है वो चीज हमसे. और इसी तरह से इस प्रोब ने मेजर किया और उसको पता चला कि यूनिवर्स यहाँ कभी डार्क एज भी था, कभी आफ्टरग्लो लाइट पैटर्न भी था, क्योंकि ये सब जगह से रेडिएशन निकल रही थी और उस रेडिएशन को इस इंस्ट्रूमेंट ने भांप लिया, स्टडी किया. Okay. So this is a depiction of how the universe evolved from this infinitesimally dense point here up till today's universe. This is a probe by NASA. It's called the WMAP, which is Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. And this operated from 2001 to 2010. And it measured the temperature differences across sky in the cosmic microwave background. So this is the afterglow light pattern, cosmic microwave background. So this temperature difference, which of course was the microwave radiation, the temperature difference caused the microwave radiation, and this probe actually measured it across the sky, and that's how it deduced how the universe would have evolved. So this not only measured this afterglow light pattern, the microwave radiation, it also measured radiation coming out from different stars and galaxies. A small thing I want to mention here, what is the unit of distance in the universe? It's not meters, it's not kilometers, it's not miles. Because universe is so vast, we cannot measure the distance of the universe in meters or kilometers or miles. So we measure distances in universe in light years. 1 light year is the amount of distance traveled by light in 1 single year. So when you send probes in the universe like this, it measures radiation coming from light years, like how much distance the radiation would have traveled in 1 year, 2 year, 3 year, like how many light years. So this is how this probe measure energy or radiation and measure the distance, and that's how we calculate how distant that particular star or galaxy is from our Earth. So that's it. This is the this is one full stop. Universe inflated to this in very short time to this occupy this much space, right? And then there's this afterglow light pattern which happened 375,000 years after the Big Bang, and this is actually transition from plasma to neutral state of the universe, and it caused cosmic microwave background radiation. This is nothing but patterns of tiny temperature differences. You know, microwave radiation is associated with heat, right? So when there are temperature differences among the quantum particles, that is measured as this microwave radiation background. Then comes the dark age. So all this was radiation era. This was the dark age when atoms and atoms, molecules, galaxies were being formed, right? Atoms were formed, galaxies were being formed. The first star shined in the universe about 400 million years after the Big Bang. So then the dark age stops and stars start shining, galaxies are formed, stars are formed, and finally this is the present day universe. When did Big Bang happen? Big Bang happened 13.77 billion years ago. So we'll study about the Planck epoch. This happened immediately after the Big Bang. In this epoch, no matter existed, but there was a super force which was operating on the universe, and it comprised of gravity, strong nuclear, weak, and electromagnetic force. The size of the universe was still small, and its temperature was 10 to the power 40 Kelvin. So Planck epoch जो है बिग बैंग के इमीडिएटली बाद था, उस वक्त कोई मैटर नहीं था, एक सुपर फोर्स था, और सुपर फोर्स में था ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारा मिला के एक सुपर फोर्स था जो यूनिवर्स में था। और यूनिवर्स का साइज अभी भी बहुत छोटा था, उसका टेम्परेचर था 10 to the power 40 केल्विन। केल्विन जो है वो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है, इसलिए हम यूनिवर्स के जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में डिस्क्राइब कर रहे हैं।
और बाद के एपक्स में यूनिवर्स ठंडा होता गया। दूसरा एपक था ग्रैंड यूनिफिकेशन एपक, द रेडिएशन एरा। अभी भी कोई मैटर नहीं था, लेकिन यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और टेम्परेचर थोड़ा नीचे आया 10 टू द पावर 36 केल्विन। तो 10 टू द पावर 40 से वो 10 टू द पावर 36 केल्विन आया, और ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 43 सेकेंड्स आफ्टर द बिग बैंग। ग्रेविटी जो है इस सुपर फोर्स से अलग हो गई। पहले ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था, तो ग्रेविटी अलग हो गई और अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साथ में बचा, और ग्रेविटी यूनिवर्स के ऊपर एक्ट करने लगी, और बाकी जो तीन फोर्सेस थे स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये स्टेबलाइज हो गए। अब है इलेक्ट्रोवीक एपक ऑफ द रेडिएशन एरा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपक है। इस एपक में यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा होने लगा। 10 टू द पावर 28 केल्विन से लेके अब यूनिवर्स का टेम्परेचर हुआ 10 टू द पावर 22 केल्विन तक, तो फिर भी अभी भी बहुत गर्म है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो भी अब अलग हो गया है उस सुपर फोर्स से, और यूनिवर्स के ऊपर अब वो भी एक्ट करने लगा। ये 10 टू द पावर 36 माइनस 10, ये 10 टू द पावर माइनस 36 सेकेंड से 10 टू द पावर माइनस 32 सेकेंड तक हुआ। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अलग हुआ, यूनिवर्स पे एक्ट किया, और हॉट आयोनाइज्ड पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स ये एक सूप की तरह अब यूनिवर्स में है, और यूनिवर्स का जो साइज है वो फुल स्टॉप से बढ़ के अब एक मौसमी के साइज का हो गया है, और जो एक्सपेंशन है दैट हैपेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 10 to the power 26. So the universe starts cooling down from 10 to the power 28 Kelvin to 10 to the power 22 Kelvin. The strong nuclear force becomes distinct and starts acting independently upon the universe along with gravity. This happened between 10 to the power minus 36 to 10 to the power minus 32 seconds after the Big Bang. And the hot ionized particles like quarks and antiquarks, they form like a soup in the universe. The universe expands by the factor of 10 to the power 26. So now the universe, which was once like a full stop, has expanded to the size of the grapefruit. This expansion of the universe is sometimes discussed separately as the inflationary epoch of the universe, of the radiation era. Sometimes it is discussed in the electroweak epoch itself. Sometimes it is discussed separately as the inflationary epoch. Like here, the universe started off as a dot, but this has expanded and occupied all of this space, and with time, like this is the time axis, this is the space axis, and the universe has expanded in space and time. This was the inflationary epoch, which is sometimes discussed separately, sometimes discussed within the electroweak epoch. Then comes the quark epoch of the radiation era. Now the temperature of the universe was cooling down further, so it has come down to 10 to the power 15 Kelvin. टेम्परेचर जो है यूनिवर्स का थोड़ा ठंडा हुआ है यूनिवर्स, और अब उसका टेम्परेचर है 10 to the power 15 Kelvin. अभी भी वो बहुत गर्म है. It's still too hot for subatomic particles to form. It's still very dense at 10 to the power minus 12 seconds after the Big Bang. Quarks and antiquarks persist as a soup but fail to coalesce. टेम्परेचर यूनिवर्स का थोड़ा नीचे आया है. टाइम हो चुका है 10 to the power minus 12 seconds after the Big Bang. क्वार्क्स और एंटीक्वार्क्स ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्वार्क्स और एंटीक्वार्क्स का बना हुआ होता है. तो क्वार्क्स और एंटीक्वार्क्स जो है वो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में एक सूप की तरह, लेकिन इतना गर्म है कि अभी भी वो साथ में जुड़ नहीं पाए हैं. उसके बाद का एपक है हेड्रॉन एपक. सो हेड्रॉन क्या होता है? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हेड्रॉन्स होते हैं. ये सब जो शब्द हैं ये क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड हैं, पर हमें भी थोड़ा सा बिग बैंग पढ़ते वक्त जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि किस स्टेज में एग्जैक्टली क्या हुआ था. तो सबसे छोटे हैं क्वार्क्स. क्वार्क्स और एंटीक्वार्क्स आपस में मिलकर हेड्रॉन्स बनाते हैं, और हेड्रॉन्स के जो दो टाइप हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. सो द यूनिवर्स स्टार्टेड टू कूल डाउन इनफ फॉर क्वार्क्स एंड टू बाइंड टुगेदर टू फॉर्म हेड्रॉन्स व्हिच आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. And the temperature at this stage was 10 to the power 10 Kelvin, and it happened at about 10 to the power minus 6 seconds after the Big Bang. लेप्टन एपक में क्या होता है? टेम्परेचर जो है यूनिवर्स का थोड़ा कम हुआ है, 10 to the power 9 केल्विन है, और यूनिवर्स अब 1 सेकंड पुराना हो चुका है. हेड्रॉन्स और एंटी हेड्रॉन्स जो हेड्रॉन एपक में बने थे वो एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट कर चुके हैं, और अब लेप्टन्स और एंटी लेप्टन बचा है लेप्टन एपक में. क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स वो भी एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट कर चुके हैं, और थोड़े से मुट्ठी भर प्रोटॉन्स बच गए हैं.
अब जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन है वो जो है वो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर हो रहा है, और थोड़े से हेड्रॉन जैसा मैंने कहा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हेड्रॉन्स जो हेड्रॉन एपक के बाद बच गए हैं वो लेप्टन एपक में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेप्टन्स क्या है? लेप्टन्स सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे न्यूट्रिनो हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, जो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक लेप्टन है, तो इलेक्ट्रॉन कभी किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोई नया चीज नहीं बनाता है। इलेक्ट्रॉन जो है सिंपली प्रोटॉन के इर्द गिर्द या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता है, वो ऑर्बिट करता रहता है। तो ये होते हैं लेप्टन्स। लेप्टन्स और एंटी लेप्टन्स भी एक दूसरे को, लेप्टन एपक में जो लेप्टन्स रह गए थे, लेप्टन और एंटी लेप्टन, वो भी एक दूसरे को एनिहिलेट मतलब नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में बचता है हाई एनर्जी प्रोटॉन और कुछ मुट्ठी भर नॉन एनिहिलेटेड लेप्टन्स, मतलब कि जो नष्ट भ्रष्ट नहीं हुए हैं वैसे लेप्टन्स मुट्ठी भर बच जाते हैं, और हाई एनर्जी प्रोटॉन्स बच जाते हैं, और थोड़े बहुत हेड्रॉन्स बच जाते हैं लेप्टन एपक के अंत में। अब देखिए आगे क्या होता है, फोटोन एपक। अब लेप्टन, और पहले मैं इसको अंग्रेजी में बता दूं। So the universe has cooled down a bit and the temperature is now 10 to the power 9 Kelvin. The universe is 1 second old. Hadrons and antihadrons, which were produced in the hadron epoch, have annihilated each other, and leptons and antileptons are left behind in the lepton epoch. Quarks and antiquarks have also cancelled each other out, and gravity is governing the expansion of the universe now. A small amount of hadrons, which could not cancel each other out, are left behind from the hadron epoch and continue in the lepton epoch. What are leptons? Leptons are some subatomic particles like neutrino and electrons that do not take part in strong interaction. For example, electron is lepton. Electron doesn't combine with another electron and form something new. Electron simply orbits around the proton or the nucleus. So it's not taking part in a very strong interaction. Leptons and antileptons, which were formed in the lepton epoch, are also now annihilating each other in the same epoch. And leptons are giving way to high energy photons. And a small amount of non-annihilated leptons, which were not destroyed, are left over. So the lepton epoch gives way to the photon epoch. What happens in the photon epoch of the radiation era? So after leptons and antileptons annihilate each other, at the end of the lepton epoch, most of the mass energy interaction in the universe is left as photons. Photons are light particles, These photons interact with the leftover charged particles, which is electrons and protons. So electrons are leftover particles from the lepton epoch, and protons are leftover particles from the hadron epoch. So these leftover particles are now interacting with photons in the photon epoch. And these interactions that started in the photon epoch will continue for the next 370,000 years. तो फोटोन एपक में क्या होता है कि लेप्टन और एंटी लेप्टन, तो जो कि लेप्टन एपक में बने और उन्होंने एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट भी किया उसी एपक में, फिर भी मुट्ठी भर ये लेप्टन्स बच गए हैं जो कि फोटोन एपक में कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो हेड्रन एपक से जो बच गए हैं प्रोटॉन्स, वो भी अभी भी इस फोटोन एपक में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फोटोन एपक में खास क्या होता है, जो मैक्सिमम मास एनर्जी जो बच जा रहा है यूनिवर्स में, वो फोटोन के रूप में बच जा रहा है, क्योंकि लेप्टन और एंटी लेप्टन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और बचा है फोटोन। तो फोटोन एपक में जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो फोटॉन्स का है, और फोटोन जो है वो लेफ्ट ओवर चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बचे हैं पिछले एपक से, उनसे अब इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो इंटरेक्शन है वो फोटोन एपक में शुरू हुआ, लेकिन वो अगले 3,70,000 साल तक चलता है। तो ये हुआ फोटोन एपक का कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है न्यूक्लियर एपक ऑफ रेडिएशन एरा। अब जो ब्रह्मांड है वो 3 मिनट का हो चुका है। सो एट 3 मिनट्स न्यूक्लियोसिंथेसिस और न्यूक्लियर फ्यूजन बिगिंस। तो अब जो टेम्परेचर है वो एकदम सही है कि इस टेम्परेचर पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, छोटे जो प्रोटॉन्स हैं वो आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे, या छोटे एटम्स हैं, छोटे जो न्यूक्लियाइड्स हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो न्यूक्लियाइड्स हैं, वो आपस में फ्यूज करके मिल के बड़ा न्यूक्लियाइड्स बना देते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 25% जो प्रोटॉन्स हैं और बाकी जितने न्यूट्रॉन्स हैं वो सारे आपस में मिल मिल के ड्यूटेरियम बना रहे हैं,
जिसको हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और ड्यूटेरियम फिर फ्यूज करके फिर हीलियम, लिथियम, ये सारा कुछ बन रहा है। न्यूक्लियर एपॉक में बेसिकली न्यूक्लियाइड्स फॉर्म हुए। तो अभी भी जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमना शुरू नहीं किया है, तो इंडिपेंडेंट और एटम नहीं बना है, लेकिन न्यूक्लियाइड्स बन चुके हैं। तो H+ जो कि प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाइड, वो बन चुका। हीलियम न्यूक्लियाइड बन चुका। ड्यूटेरियम जो हैवी हाइड्रोजन होता है, जिसमें कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, वो बन चुका है। तो एलिमेंट्स, तो न्यूक्लियाइड्स भी बन रहे हैं, और न्यूक्लियाइड्स के आइसोटोप्स भी बन रहे हैं। आइसोटोप्स मतलब एक ही एलिमेंट जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और अलग अलग एटॉमिक मास होता है, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे जो ड्यूटेरियम है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो ड्यूटेरियम का आइसोटोप, हीलियम का, लिथियम का, सब न्यूक्लियाइड्स बन रहे हैं, न्यूक्लियाइड्स के आइसोटोप्स बन रहे हैं। और 20 मिनट पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है, जब जब ब्रह्मांड 20 मिनट पुराना हुआ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस अब बंद हो जाता है, और अंत में बचा क्या? 75% हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, 25% हीलियम न्यूक्लियाई है, और ट्रेसेस ऑफ लिथियम न्यूक्लियाई है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो रेडिएशन स्कैटर कर रहे हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के साथ अटैच हैं और रेडिएशन फैला रहे हैं। तो अब अंत में ये बचा। अब इसी बात को मैं अंग्रेजी में एक बार दोहरा दूं, जो मेरे जो जिनको हिंदी ठीक से समझ नहीं आती और अंग्रेजी में बेटर समझते हैं उनके लिए। So at 3 minutes, nucleosynthesis or nuclear fusion begins. Nuclear fusion reaction is a process which takes place under a high heat conditions where two smaller nuclei fuse to form a bigger nuclei. So 25% of the protons and all the neutrons fuse together to form heavy hydrogen. So then deuterium or heavy hydrogen fuses to form helium, lithium, and their isotopes. At 20 minutes, now the universe is 20 minutes old and nuclear fusion ceases. And cosmic matter now consists of 75% hydrogen nuclei, 25% helium nuclei, traces of lithium, and the isotopes of all these nuclei. And there are, of course, free electrons which are interacting with the photons and scattering radiation. So as you can see, in the nuclear epoch, nuclides have formed, but atoms have not formed. Atoms become atoms when an electron is attached to starts orbiting around the nucleus. But still the electrons are free and they're not interacting with the nucleids. So this is a nuclear epoch. So in this video previously I told that photon epoch is also called nuclear epoch. Sorry, there was a confusion. So I've reshot part of this video, and photon epoch can be easily separated from the nuclear epoch because these two distinct phenomena happen in these two epochs. Photon dominates the photon epoch, whereas nuclides dominate the nuclear epoch. Then comes the atomic epoch. So this epoch is really interesting because this becomes the initiation point of the matter era. Because now matter in its original form starts appearing. So what happens? Temperature comes down in the universe just enough to attract electrons to nuclei. So now electrons are coming around the nuclei, and finally atoms are being created. And hydrogen and helium atoms, not just nuclei, hydrogen and helium atoms are formed. Temperature of the universe is 3000 Kelvin, and this happens about 47,000 years after the Big Bang. Hydrogen, deuterium, helium, and lithium now dot the universe within the atomic clouds, and this gives way to the galactic epoch. So अभी क्या हुआ? टेम्परेचर यूनिवर्स का इतना ही कम हुआ है कि एकदम सही समय है कि इलेक्ट्रॉन्स अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अटैच हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, और फिर जो न्यूक्लियाइड्स हैं उनके पास अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम का एटम फॉर्म हो गया, तो मैटर आ गया, एटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ a matter is atom. So now atomic era, atoms have come into being. टेम्परेचर जो है वो 3000 केल्विन है अब, और ये करीब 47,000 साल अब बिग बैंग थ्योरी के बाद हो चुके हैं, तो यूनिवर्स अब 47,000 साल पुराना हो चुका है। हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन जो कि ड्यूटेरियम है, और हीलियम और लिथियम, अब ये सारे एटॉमिक क्लाउड्स जगह यूनिवर्स में फॉर्म हो रहे हैं, और यही जो है वो गैलेक्सी का सीडलिंग बनेंगे, और आगे फिर गैलेक्टिक एपॉक होगा। गैलेक्टिक एपॉक में क्या होता है? Small pockets of gas with hydrogen and helium atoms were fusing together due to gravitational force and creating new clusters of atoms. तो जो हाइड्रोजन और हीलियम एटम है वो आपस में मिल के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिल के
नए नए एटम्स, बड़े बड़े एटम्स बना रहे थे। एंड ये बड़े बड़े एटम्स, ये जो क्लस्टर है एटम्स के, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हैवी हाइड्रोजन, और ये फ्यूज होकर और बड़े बड़े एटम बना रहे थे। तो यूनिवर्स में अब बहुत तेजी से मैटर का क्रिएशन हो रहा था, और ये जो तेजी से मैटर का क्लाउड फॉर्म हो रहा था जहां तहां, these clouds of matter would later become they became the seedlings of galaxies, कि गैलेक्सी का बीज अब पड़ चुका है क्योंकि मैटर आ चुका है। So small pockets of gas with hydrogen and helium atoms were fusing together due to gravitational force and creating new clusters of atoms in the galactic epoch. These clusters of atoms became the seedlings of galaxies. In these galaxies, stars began to form, and this gave way to the stellar epoch. The first star shined about 400 million years after the Big Bang. Stellar epoch में क्या होता है? Stars within the galaxies now are beginning to form because fusion reaction is starting, and lot of fusion reaction is giving out energy in the form of light energy. So stars are forming because of fusion reaction happening, and lot of energy is being radiated out. That's what happens in a star, right? Fusion reaction, energy radiated out. So the dark age of the universe is now gone, and now the universe enters the light age. The formation caused tremendous ripple effect and helped shape today's universe and the solar system. तो जो स्टार्स का फॉर्मेशन है उससे ट्रिमेंडस रिपल इफेक्ट, क्योंकि स्टार्स आपस में फॉर्म हो रहे थे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बहुत ही पावरफुल रिएक्शन है व्हेन वी टॉक इट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि बहुत ज्यादा रेडिएशन इसमें इमिट होता है। सॉरी, तो जब बहुत ज्यादा रेडिएशन इमिट हो रहा है तो वो वेव्स भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एनर्जी तो वेव्स की फॉर्म में भी होता है ना। और पूरे यूनिवर्स में रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि कहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन हो रहा है और बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन हो रहा है। तो बहुत लाइट एनर्जी क्रिएट हो रहा है, बहुत एनर्जी रेडिएट हो रहा है, बहुत रिपल्स क्रिएट हो रहा है यूनिवर्स में। Heat within the stars caused the formation of all 88 elements found in the periodic table. तो जो 88 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो उनका सबका जो जन्म है वो अब हो रहा है क्योंकि तारों के अंदर हीट है, और न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन से लेके वो हीलियम, लिथियम, हैवी हाइड्रोजन और सारे भारी भारी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे अब फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है। और यही जो भारी भारी एलिमेंट्स हैं उनसे फिर ग्रह, उपग्रह और फिर फाइनली जीवन उनसे आया। So heat within the stars caused the formation of all 88 elements found in the periodic table via the fusion of hydrogen and helium. These elements became the building blocks of planets, moons, and ultimately life. So stellar epoch में क्या होता है? There is a lot of fusion reaction, lot of heat and energy is radiated out, stars are forming, and one formation of one star is sending out waves in the universe, and that's causing that's actually fueling the formation of other stars. So what happened? Solar system was formed like this. There was one supernova, one star burst out, and that energy sent out shock waves in the universe, and that shock wave actually triggered the formation of the solar system. But we'll discuss the formation of solar system in a later video because this video is itself a little long and lot of information for one video. So we'll discuss the formation of solar system in my next video. तो मैंने अपनी तरफ से बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करने की काफी कोशिश की है। छोटे छोटे एपेक्स हैं, पर यूजीसी नेट के एग्जाम में के सिलेबस में ये मेंशन है, और यूजीसी नेट के एग्जाम में जनरली जब क्वेश्चंस आते हैं बिग बैंग थ्योरी से वो ये होता है कि व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, व्हाट वाज द एज ऑफ यूनिवर्स, what is the age of solar system, or what is light years, what were the main eras in the Big Bang according to Big Bang. So it was a radiation era and it was a matter era. They will not ask you बहुत specific questions कि stellar epoch में क्या हुआ था, या atomic epoch में क्या हुआ था, या Planck epoch में क्या हुआ था। बहुत specific, बहुत detailed question Big Bang theory से नहीं आता है। जनरली बिग बैंग थ्योरी क्या है और कौन कौन से दो मेन एरा थे, रेडिएशन एरा और मैटर एरा, वो क्या थे, बिग बैंग की एज, यूनिवर्स की एज क्या है, या बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था, 13.77 बिलियन ईयर्स अगो, यूनिवर्स की एज भी वही है। और जो है लाइट ईयर क्या होता है, स्पेस में डिस्टेंस किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो लाइट ईयर्स। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे यूजीसी नेट में या इवन मास्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस किसी भी एग्जाम में बिग बैंग थ्योरी से इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि बिग बैंग थ्योरी को मोटा मोटी डिफाइन बिग बैंग थ्योरी या एक्सप्लेन बिग बैंग थ्योरी ब्रीफली, इससे ज्यादा नहीं आता है। पर क्योंकि हम साइंटिस्ट हैं तो हमें
डिटेल में कोई बात समझना चाहिए, और समझने से, डिटेल में कोई बात समझने से लंबी देर तक बात दिमाग में रहती है और याद रहती है। तो इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल बताया। पर यूजीसी नेट में इतने डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पहला एलिमेंट जो क्रिएट हुआ वो कौन सा था? हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट जो क्रिएट हुआ वो कौन सा था? हीलियम। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वो होता है जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा मिल जाते हैं और एक बड़ा एटम या बड़ा न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो मोस्ट प्रोबेबली हम एनवायरमेंटलिस्ट पहले से ही जानते हैं, क्योंकि हमने स्कूल में ही पढ़ रखा है। पर ये टॉपिक इंटरेस्टिंग था और डिटेल में समझने से याद रहता है, इसलिए मैंने इतनी डिटेल बताया। So in the UGC NET exams or your master exams, you are not gonna be asked pretty detailed questions about the Big Bang Theory. You most likely will be asked, what is Big Bang Theory? Explain it briefly. So you can say what Big Bang Theory was and what the two major age era, the radiation era and the matter era was. They can ask you questions like, what is the age of the universe? Or what is the unit in which distance is measured in the universe? Or define light years? Or what was the first element created in the universe? It was hydrogen. What was the second element created in the universe? It was helium. So simple questions like this would be asked from the Big Bang Theory. In a later video, I'll discuss how the solar system came into being, because that will be a detailed question and you could be asked about that in the UGC NET exams. Or you could be asked about that in environmental science master's exam. So with this, hopefully I have done justice to this topic, and if not, I apologize for any shortcomings. And with this, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.